Here we have Mr. Prashant from KIIT Bhubaneswar with us. Prashant, please introduce yourself to the audience. Hi everyone, my name is J. Sriprashant. I am from Chennai and I am currently pursuing my BTech from Kalinga Institute of Industrial Technology. And I took computer science because I have a lot of interest in coding. So this was a brief introduction about me. Thank you, Prashant. We would like to know some basic questions about your college. So, Prashant, first up, we would like to ask you about the location of your campus. So, Prashant, how can we reach to your campus? What's the nearest railway station? And can you please tell us about the road connectivity about your Yes, campus? of course. To reach KIT, first, if you're going from airport or you're arriving from airport, then of course you have to take a Uber or Ola, etc. So to reach from airport, it takes 41 minutes, 41 minutes to 45 minutes approx. And if it's a peak time, or you can say at 6 to 7 p.m., it takes at least 2 hours. And the distance is approximately 12 to 15 kilometers from airport. And the railway is a little bit closer to the KIT University, and we can reach in at about, I think, in like 20 to 30 minutes from railway station. So, Prashant, how is the location within the city? Is the campus within the city or it is situated at the outskirts? The campus is at outskirts of the city, and it is not present in the center of Bhubaneswar. It is in Patia, which is a place in Bhubaneswar, and it's a very nice place. And there are a lot of malls around here, and the closest one is in from KIIT. I think it's 12 kilometers. It's called Esplanade Mall. It's also a nice mall, not a very big one or fancy mall, etc. But it's a small one, but it's nice to have a mall around here. And there is a road, or everybody calls it KIIT Road. In that you can get everything. You can go for an evening stroll, and also you can buy everything there. You can see a lot of students also gathering here and there for a lot of evening snacks, and gyms are also there in campus only. And it's a very huge campus, so at least it takes one day to get around and get to know everything if you are new to this place. Because a lot of shoots or pics you will see, which is very, we have a sculpture park and rose garden. So to kill your time, you can always visit these places. So, are there any nearby coachings for competitive exams such as GRE, GMAT, GATE, or CAT? Still, I haven't found any coaching center for these exams and all. But if you have taken admission in KIIT, they provide a paid course for all these GRE, GMAT, GATE, etc. But the classes will be online. It will not be offline. But still, Still, you actually, can meet the teachers. Yeah. You guys are actually getting the content. You don't have to search for that. Yeah, that's true. But I can say you have to pay 7,000 for getting all these courses. So let's proceed to the next question. Could you tell me about the academic and research opportunities? Academics. Okay, so in KIIT, you have faculty from mostly they are from Utkal University, and some faculties are good. Some faculties are, what you can say. I don't want to say bad, but they are knowledgeable, but at times they are unable. You have to search the content in YouTube for that subject. And also research opportunities is you have to reach out to particular teachers. They will list out the teachers which are good in research field or etc, etc, etc. So you have to reach out to them, and if you have a topic in your mind or a research topic in your mind, you have to just say to that person or faculty, and he or she will try to help you out in every way. He will give. That's great, Prashant. Let's move on to the next question. What is the tuition fee and hostel fee? कितना मोटा छेद होने वाला है जेब में? The KIIT जो है प्राइवेट है, ये तू भी जानता है. So tuition fees is 1,75,000 per sem. And
and there are a lot of categories of hostel that you have to opt first. First is one bed, which is given to only postgraduate or fourth year students, and it Okay. is 90,000 person. Next 90,000 comes, per. yes, next comes the three bed and two bed, and first bed AC, and there is a non-AC. There are two categories, and just I think the difference amount is 5,000 between AC and non-AC. I am currently staying at two bed AC, but they have fooled us somehow because it's four bed. Okay. So how much hostel fee you are actually paying? I am paying total of 60,000 for this, and plus 22,500 for mess. Okay. So 88,000. Yes, total 88,000. 88,000 plus 1,75,000. It's around, yeah, it's very costly. I told you. 5 lakh a year. All like 5 lakh a year. Yes. So, Prashant, can you please tell us about the clubs and departments in your college? In KIIT, you have a lot of clubs, and all the clubs, if they are grouped together, they form a society called KSAC, Student Activity Center. In that, if you're a new joiner, if you're a first year student, then if you're good at dancing or singing, etc., there is a separate building for all these clubs and department. So you have to go in and register to a particular thing which you are good at. It may be dancing or singing, etc. And for coding, there are GFG, KIIT, Microsoft Student Ambassador one, and Code with Geeks is also a club for coding. These are the things are the three clubs that I know about for coding. And for student, for dancing, and if you're good at painting also, you can go to KSAC. And there are a lot of other fields if you go into KSAC, you will find dancing society, you will find painting society, or you'll find sports center, etc. Those are good at badminton also, they can have a separate group by themselves in sports. Is there any roasting club? Roasting club? No, actually, it's in Discord only. Created by students. Just Created by add me in the group. Of Both of course, us of will course, roast of Aniket. course, Both of of course, of course, of What's course. the point of roasting me, bro? go on to the next question. So, Prashant, can you please tell us about the eateries available in your college? Like, is there any all-night canteen available or any big food chain like McDonald's, Domino's, etc., etc.? और कुछ कंसेशन वगैरह मिलता है कॉलेज से इसके लिए? कीट है भाई, कंसेशन कोई नहीं देगा, बस पैसे लेते हैं इधर से. बस So ये तो first, let's talk about the canteen. In KIIT, in every hostel, in each and every hostel, we have what is in here they call it food courts. They are In each present, hostel, you have a particular canteen. which is called as food courts in each hostel. I don't know why it is a canteen only. So, to spend some time or with your friends or etc., you can always go into food courts. There you will get all sorts of things from you can say Mountain Dew to Amul Taza, everything you can get there, plus pastries, burgers, etc. But I would strictly recommend do not eat anything from food court. Uh, it, it's hygienic, but it's not very tasty. In here also, I don't know if you order a non-veg something, they will always put some fish in it and Something is fishy. not really fishy. How, and I don't know what they do with it, and I don't want to get into that. So what people do or what students usually do is something that I have said about is in previously I have said about it's KIIT Road. And in KIIT Road, you will have all sorts of major food chains ranging from Burger King to McDonald's. McDonald's is still under construction, but it will be available soon. After a year, of course, I think. And you can always find Domino's, Pizza Hut, etc. Kiventers also.
Such big brand names are just a dream for us. No, no, we have KFC here. Kapoor Food Court. Yeah. So how is the hostel and mess का खाना? देखो मेस का खाना तो ये है कि सीमेंट से रोटियां नहीं बनती है, लेकिन रबड़ जरूर बन जाता है 5-10 मिनट में रोटी का। और दाल जरूर तैरता है। और मेरा एक दोस्त है, अपूर्व नाम है उसका, वो पहले पानी छानता है दाल से, फिर उसके बाद खाता है वो। उसके बाद आते हैं फीस में, तो हॉस्टल मेस फीस इज अबाउट 22,500 and they provide the worst service you will ever find here. And the hostel fees in the type of hostel which I'm staying is 2 bed, but they have somewhat fooled us and gave us 4 bed AC, and the fees for that is 60,000. So इतने फीस के हिसाब से जो सर्विस होना चाहिए वैसा है नहीं। और रही बात फॉर वेज एंड नॉन वेज पीपल, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट वेज का ये है कि रोज पनीर में बनते रहता है, तो उनको थोड़ा अलग सा वो होता है बीटी की, रोज ही पनीर दे रहे हैं लोग। यहाँ लेकिन हमको वही हफ्ते में एक नॉन बार जो मिलता है, मिलता है। उसमें भी पनीर नहीं मिलता। और एक बात है फिर, बाकी नॉनवेज के लिए तो ठीक है, वेनेसडे से लेके सैटरडे तक तो नॉनवेज ही रहता है। फ्राइडे में चिकन बिरयानी बनती है जो थोड़ा स्वाद रहता है जिसमें। अरे भाई, तू कब से नॉन वेज हो गया भाई? तो बता। मैं, अरे वो सब किट आओ, तुम पता चलेगा कि रोज पनीर खा के क्या होता है। हम्म, चल ठीक है So फिर। let's proceed to the next question. So how are the placement and internship opportunities? कब आ रहा है पैसा ही पैसा होगा वाला मोमेंट? किट में पैसा ही पैसा वाला मूवमेंट वो नहीं मिलेगा जी। वो तो वो बस उन्हीं को मिलेगा जो रोज हॉस्टल के रूम के अंदर बैठे हैं, लैपटॉप खोले, पढ़ते रहे, बाहर ना निकले। उन्हीं को लगता है। एंड जो हाईएस्ट सैलरी इस बार गया है वो है 52 लाख। वो भी योगा बाइट ने, एक स्टार्टअप है, उनने दिया था। And talking about internships, from third year onwards, you will start getting internships from training and placement cell. And that is, recently we have got, I think, 5 to 6 internship opportunities from LinkedIn and Providence, Travelogy, Dell, etc., Atlassian, and काफी बड़े बड़े काम Amazon हैं। also. और बड़े लोग ही निकाल पाते हैं जितने भी हैं किट में। है कंपटीशन है इधर। But और still जो you are है, getting those opportunities. हाँ, लेकिन निकलेगा नहीं ना, हम लोग को पता है। क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से अगर हम बोलें कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव कंप्लीटेड 7 internships एंड दे आर स्टिल अर्निंग बाय देमसेल्फ। दे आर पेइंग फॉर देयर आईफोन्स एंड दे आर paying for their hostel fees, etc., all by themselves. And even I know some people, a person whose name is Agras, and he has worked in startup from second or first year onwards only. So some people are in, they are very so much endorsed into coding, and you cannot take them away from laptop if they once start the coding, etc. उस टाइप के भी लोग हैं इधर। सो थोड़ा कंपटीशन है इधर, लेकिन एक बात है कि जैसे बिट्स में है, ट्रिपल आईटी वगैरह में है, उस टाइप का एनवायरनमेंट थोड़ा कम है। तो जो मतलब मैटर करेगा कि कैसे दोस्त बना रहे हैं हम लोग। अगर जो अपना रूममेट होगा या दोस्त होगा, अगर उसको भी ज्यादा इंटरेस्ट है कोडिंग में, या वो माहौल वैसा रखेगा रूम का, तो हम लोग भी उसी टाइप से ग्रो कर पाएंगे। तो ये भी थोड़ा एक फैक्टर बन जाता है इधर। और रही बात तो प्लेसमेंट्स की, तो किट हैज टाइड अप विद हाई रेडियस। कोई कुछ पढ़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर एफर्ट डाले तो उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उतना वर्थ इट नहीं रहेगा, उतना जैसे 2 लाख पर एनम किसको अच्छा लगेगा? 5 लाख% देख के वही वही बात आ जाती है। इसीलिए सब। और अभी तो फिलहाल हाई रेडियस के साथ ही, जितना भी है मेजर टाइप हाई रेडियस के साथ ही है। और वो पीपीओ भी दे देते हैं 12-13 लाख का। That's great. और सो प्रशांत, और एवरेज तुम्हारे पैकेज कौन। जो है, हाँ, एवरेज पैकेज है 8.2 लाख बोल सकते हैं। और उसके बाद हाईएस्ट पैकेज अगर पीपीओ में देखा जाए तो एटलासियन देती है। वो तो सबको पता है कि 83 लाख लेके गई है अभी जस्ट।
और हाईएस्ट जो डायरेक्ट जो प्लेसमेंट हुआ है हाईएस्ट में वो 52 लाख का है, जो एटलासियन का था वो डोमेस्टिक था या इंटरनेशनल था? डोमेस्टिक का, चेन्नई में, मतलब यहाँ आई थी उन्होंने वो। So let's move on to the next question. कोडिंग कल्चर की तो तुमने बात करी थी, तो अब आ जाते हैं हम्म। सीनियर जूनियर रिलेशनशिप में। कितने लोगों की रैगिंग की तुमने? हाँ सीनियर टीचर। जूनियर सेक्शन के बारे में बोले तो अपने ही हॉस्टल में 7th फ्लोर में वी हैव ऑल द जूनियर्स सेकेंड ईयर पीपल, बट ऐसा कुछ रैगिंग वगैरह हुआ नहीं है आज तक। हम लोग मेरे रूममेट्स और हम लोग बोलते तो बहुत हैं कि लेट्स गो एंड हैव सम फन विद देम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि यहाँ में अगर सीनियर्स की बात करें तो हम लोग भी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में थे, so seniors were very helpful. They were very, they help with all sorts of things, academic syllabus, which subject we had to choose for next sem and placements etc. तो सब कुछ सीनियर है कि अगर कनेक्शन हम लोग का, अभी तो हम लोग कोरोना के कारण 1-2 साल तो घर ही पे थे। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर से ही होते तो ज्यादा हम लोग को एक्सपोजर मिल जाता पहले से। इसीलिए इस बार थोड़ा कह सकते हैं कि हल्का सा प्लेसमेंट वगैरह भी इधर उधर है, जस्ट इस कोरोना के कारण। वो तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आया ही था। हम्म। और रही बात जो अगला पॉइंट है जो स्लाइड में दिख रहा है मेरे को, वो है फेस्ट का। आफ्टर ऑल द एग्जाम्स फॉर अ पर्टिकुलर सेमेस्टर वी हैव, मोस्ट प्रोबेबली इट्स अराउंड दिसंबर आफ्टर बिफोर क्रिसमस वी हैव अ फेस्ट विच इज, बहुत लोग आते हैं और एंजॉयमेंट रहता है। मैं तो पहली बार देखूंगा फेस्ट, इसलिए कुछ बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में। So can you please tell us about how many people opt for further studies from your college? कोई पर्टिकुलर नंबर रेशियो कुछ अवेलेबल है तुम्हारे पास परसेंटेज इस पे? हायर स्टडीज का तो ऐसा कुछ रेशियो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए एक क्लास में अगर 60 लोग हैं तो उनमें से 20 या 30 लोग तो हमेशा फर्दर स्टडीज में रहते ही हैं। क्योंकि एक सर्वे, जहाँ तक एक डाटा सेट क्रिएट करने के लिए हम लोग ने सर्वे लिया था, उसमें ये पता चला था। Could you please tell us about your alumni network? फेमस पर्सनैलिटीज देखें तो ब्यूटी चांद है, उन तो इसके वो अलावा सोचेंगे। कुछ स्टार्टअप कल्चर है कॉलेज में? हाँ हाँ, और स्टार्टअप के लिए किट का तो अलग से प्रोवाइड करते हैं अगर किसी को स्टार्टअप में ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड इफ दे हैव एन आइडिया टू पिच और समथिंग एक्सेट्रा, एंड इफ दैट आइडिया इज सो गुड, सो किट आल्सो प्रोवाइड्स विद मनी to fund their startup. And if the once the startup is grown and all, and you can once you are settled, then you can return the money. So Okay, so यहाँ, they are providing an incubation center and providing you with debt. yes, Recommend any of your juniors either to take a drop or to take admission in KIIT? that depends on their potential, of course, because if they feel confidence in themselves, or if they know that they can crack IIT JEE and all, and of course they should go for a drop year, right? But as our teachers say कि ड्रॉप से कोई मतलब नहीं होता, ना ड्रॉप लेने से कोई फायदा होता है। तो अगर तुमको करना है तो 12th से ही चालू हो जाओ। आजकल तो IIT JEE के लिए 8th क्लास से ही चालू होते हैं, तो वही ड्रॉप लेने से So it was a great time having you, Prashant. थैंक Thank यू, you so much. Thank you so and it much for was coming nice to to our meet you all platform. too. Thank you. Same here.